Come on video people. One person is pending. सिया. ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 92 प्रोटॉन्स एंड 238 माइनस 92 न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे संस्कृति? जब तक बताएगी तब तक और टाइम लगेगा. साइज ऑफ न्यूक्लियस. Number of protons and electrons are equal. ठीक है, 92. Cool. Size of nucleus. The size of the nucleus has been measured with the help of a variety of experiments involving the scattering of particles. जो हमने अभी पढ़ा था. तो कैसे पता चल रहा था हमको साइज ऑफ न्यूक्लियस? हमको पता चलता था बिट रिबाउंड. तो न्यूक्लियस पे हिट करेगा तो रिबाउंड होगा, है ना. तो वहां से हमको पता चला उसका साइज ऑफ न्यूक्लियस. तो इफ r is the radius of the nucleus having mass number a, then r equals to r naught a to the power 1/3. ये नोट कर लो उसको. अगर मास नंबर दिया हुआ है तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पता चल जाएगा. तो मेरा वीडियो नहीं है. Done. Obtain the approximate value of the radius of nucleus blah. They'll give R naught value. हाँ. Put the answer on chat. What is A? A is the atomic number. Note नहीं किया तुमने? Sorry. I noted, but what is? Isn't Z supposed to be the atomic number? Yeah, A is in mass number. Mass or number? Atomic mass number भाई.
How do we find cube root of 238? Approximate निकाल लो. 1 second. How 238 to do that? 238 mass number Oh, is mass number. How to take out cube root? सबसे पास क्यूब रूट किसका दिख रहा है तुमको? मतलब सबसे पास क्यूबिक नंबर कौन सा दिख रहा है? 6. 6. 6, yeah. तो अप्रोक्सीमेटली 6 ले लो. 6.1. won't we do 6 point something? How just like approximately? भाई जितनी तुम्हारी श्रद्धा उतना कर लो मेहनत. 6.1 तक कर सकते हो, 6.2 तक कर सकते हो. अभी उसने बोल दिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो आई वुड हैव टेकन ओनली 6. No, but like in It's case 6.2. It's 6.2. 6.2. In case we don't know like any closest cubic number, then otherwise how to find cube root? स्क्वायर रूट निकालना आता है? Yeah. मेरे को भी वही निकालना आता है. आई डोंट नो क्यूब रूट कैसे निकालना है. Is there like a long division for cube root also? अरे नहीं भाई, there are other ways to do that. For example, logarithm. You can find it from logarithm. But तुम लोग को logarithm नहीं आता. आता है. तो फिर logarithm से निकाल लो. Cube root is x I to don't the power 1/3, right? Yeah. Yeah. हालांकि मुझे लगता है जिस तरह हम स्क्वायर रूट निकालते हैं वैसे क्यूब रूट भी निकल जाता हो. स्क्वायर रूट में हम दो निकालते हैं ना. लेट मी सी. Yeah, you can find cube root by the long division thing. Instead of pairing like we do in square root, we have to make groups of 3 like for this one. Yeah. Because ultimately वही तो कर रहे हैं, तो इसलिए वैसे ही निकल जाता होगा. But ठीक है, this is not a class on cube root, so you guys can move on. Done. Okay, 7.44. Many people have given the answer. Cool. Nuclear density. Density of nuclear matter is the ratio of mass of nucleus upon its volume. Cool. If m is the average mass of a nucleon and a is the mass number of the element, then mass of nucleus is ma. Right. ठीक है. A is the mass number of element. तो कितने न्यूक्लियॉन होंगे उसमें? Hello. A. nucleons. What is nucleon? Protons or neutrons. No. It's either it's a How name A protons or neutrons, so it's not the addition of protons and neutrons. So neutrons, yeah. so it'll be A Plus number of neutrons. Yeah. Hey, what is a nucleon? either a proton or a neutron. Either a proton or a neutron. So that is A, right? No, but like the number of neutrons might not be equal to the number of. Correct. Yeah. भाई atomic mass number में it is protons plus neutrons, right? Yeah. Yeah. So that's nucleon. No, protons plus No, but you could have 14 neutrons and 14 protons and 13 neutrons. But nucleons
is the constituent of a nucleus, and that is mass number. That is Oh, A. right. Yeah. कहाँ Total लिखा है number of इसमें? न्यूक्लियन will किधर be the लिखा है? mass. कहाँ पे था न्यूक्लियन? Where is न्यूक्लियन? कहाँ लिखा हुआ है? See, nucleon is either proton or neutron. कहाँ So लिखा we हुआ है? Is one nucleon. One nucleon is proton or neutron. So Correct. total number of if we add nucleons all- will be yeah. So the number of nucleons in an atom is its mass number A. Because उसमें जितनी चीजें रखी हुई है, those are nucleons only, right? Either proton or neutron. Anyway, cool. So एक Yeah. न्यूक्लियन का मास अगर m है, तो कितना उसका टोटल मास होगा? m into Ma. A. Because A न्यूक्लियॉन्स है उसमें, और रेडियस अगर r है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम कितना होगा? क्या कितना होगा? If radius is r, then the volume will be 4/3 pi. By R R cube. cube. okay. So डिवाइड कर देंगे हम उसको, राइट right? अभी r क्यूब को हम लिख सकते हैं r नॉट a 1/3 क्यूब. यहां से ये आ गया, यहां से ये आ गया, इसको नोट कर लो. थोड़ा जल्दी जल्दी करो, ये वाले पार्ट बहुत दीज आर नॉट वेरी हैवी. आगे जब रेडियो एक्टिव डीके पढ़ेंगे वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा. Radioactive decay is not there. सीरियसली बेस्ट खत्म हो गया फिर तो चैप्टर. रेडियो एक्टिव डीके नहीं है इस साल भी नहीं. मैम ने तो कहा नहीं है, उन्होंने पढ़ा दिया. Can we still do it? Why? Yes. वो हैवी है तो टाइम जाएगा. ओके, एक बार ग्लांस तो कर ही लेते है ना. After what we have done, what we are supposed to do at the end, if we have time. नहीं, अभी भी कर लेते हैं. I'll just give you a sense of it, because you know these kind of topics are not just usable for radioactive by itself, right? You can use it for a lot of things in your life also. If you start taking quantified decisions in your life, you'll use these concepts. अभी तुम लोग ऐसा लगता है लाइफ पे कौन से कॉन्सेप्ट में कैलकुलस की जरूरत पड़ती है, but once you become very precise, I use calculus at least once a month or once a week maybe in my life. Once a month is fine, but also is there calculus in radioactive decay ka calculation? Yeah. Done? Note कर लिया? Thus, the density of nucleus is constant, independent of A for all nuclei. ये लिख लेना. Density of nuclei देखो 2.3 into 10 to the power 17 kg per meter cube. ये तो बहुत dense हो गया. Done? चल. 1 second, sir. 1 second.
Yeah. Done. Okay. Given the mass of ion nucleus as blah and A as blah, find the nuclear density. उसका न्यूक्लियर डेंसिटी कितना होगा? सेम होगा ना, ए पे डिपेंड नहीं करता, वही तो बोला उसने. Supposing that protons and neutrons have equal masses, calculate how many times nuclear matter is denser than water. Take the mass of a nucleon and do. Okay. ठीक है, mass, energy and nuclear binding energy. Mass energy. चलो अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा शायद. Einstein showed that mass is another form of energy and one can convert mass energy into other forms of energy. Einstein's mass energy equivalence equation is equals to mc square. That shows us कि एक mass में कितना energy है, where E is the energy, m is the mass and c is the velocity of light in vacuum. The mass of a particle measured in a frame of reference in which the particle is at rest is called its rest mass. फिर से पढ़ो इस पार्ट को. Mass of a particle measured in a frame of reference in which the particle is at rest is called its rest mass. जैसे कि अभी मैं तुम्हारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मैं रेस्ट पे हूं, तो मेरा ये रेस्ट मास हुआ. बट सन के लिए हम मेरा रेस्ट मास है क्या? नहीं है ना, बिकॉज उसके लिए मेरा स्पीड बहुत ज्यादा है. ओके, सो यूजुअली डिनोटेड बाय एम नॉट. द रेस्ट mass energy of a particle would be m naught c square, which is enormously large on account of large value of c. If I is the kinetic energy of the particle, then its total energy is rest mass energy plus kinetic energy, which is m naught c square plus I, where m is called the effective mass of particle and when it is moving. Got it? तो जब पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है? m नॉट c स्क्वायर, जो उसके पास जितना मास है उसके कारण जो एनर्जी है, प्लस काइनेटिक एनर्जी I, that is equals to mc square. So that m is called the effective mass of the particle at that time. तो मुझे बताओ ये इफेक्टिव मास जो है वो उसके रेस्ट मास से कम होगा कि ज्यादा होगा? More, right? हाँ, More. करेक्ट, मोर. बिकॉज m इज इक्वल टू, अभी c स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो रेस्ट मास कितना हो जाएगा? m नॉट c स्क्वायर प्लस के. तो m इज इक्वल टू m नॉट प्लस के बाई c स्क्वायर. तो उसका इफेक्टिव मास इज मोर देन द रेस्ट मास. गॉट इट? But what is its effective mass? Like, what's the definition? When things go at a very very high speed, like comparable to speed of light, Yeah. then the thing will not have the same mass as our rest mass, because now it has more energy. With so like a substance that is when it is at rest, if it has a certain mass, if you accelerate, like throw the particular substance at this near to speed of light, it will have a value that is not equal to its original rest mass. हाँ, it'll be But the it will be effective more. mass. It'll be more. It will be more. But It'll be why? more. Huh? But why? Because Einstein said that mass and energy are equivalent. But again, in that respect, you cannot measure the mass the way we measure it on, with Yeah, gravity. because it's at the speed of light. Almost at a speed of light. Yeah. Yeah, almost. It's So a that's theoretical concept. But then how do we know if it's greater or less? अभी तो बताया ना उसने, because effective mass mc square is equals to m naught c square plus kinetic energy. तो जो उसका effective mass होगा, that will be m naught plus kinetic energy by c square. Okay.
nuclear binding energy. The sum of the masses of neutrons and protons forming a nucleus is more than the actual mass of the nucleus. This difference of mass is known as mass defect. आया समझ में? ये वाला sentence फिर से पढ़ूं. Sum of the masses of neutrons and protons forming a nucleus is more than the actual mass of the nucleus. This difference is called mass defect. So जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है उनके मास को अगर तुम मिला लोगे तो वो ज्यादा मास आता है एज कंपेयर टू जो एक्चुअल मास है न्यूक्लियस का, वो मास डिफेक्ट है. If a certain number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus of a certain charge and mass, an energy EB will be released in the process. The energy EB is called the binding energy of the nucleus. Got it? Why is it What released? causes mass defect? वो आ रहा है अभी, कोई पढ़ा रहे हैं अभी. तो अभी ये समझ में आया कि EB जो है वो क्यों रिलीज होगा? नहीं. Because they are coming to a lower state of energy at us When they are put together. when they are put together. So now they are coming to a lower state of energy, which is where they are releasing energy, EB. Yeah. Okay. The energy EB is called the binding energy of the nucleus. अब वो हट गया इसलिए वो bound है together. Got it? Thus, the binding energy of a nucleus may be defined as the energy equivalent of the mass defect of the nucleus. Got it? क्योंकि इन दोनों के पास और तो कोई एनर्जी नहीं थी, मास ही था. दोनों पास आ गए, अब कोई एनर्जी रिलीज हुई तो वो मास कन्वर्ट हुई होगी. तो अगर EB एनर्जी रिलीज हुई तो कितना मास की इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज हुई? EB इक्वल्स टू mc स्क्वायर. तो कितने मास की एनर्जी हुई? वो E अपॉन c स्क्वायर, राइट? But how can mass convert into a form of releasable energy? That's how energy is transferred now. If you lose some amount of energy, your mass will not reduce. Mass is constant. नहीं, so that's the thing, right? In classical mechanics, we are taught that mechanical energy can be created into electrical energy, right? Yeah. But how is it created? वो नहीं पढ़ाते ना हमें. मतलब we know कि भाई अगर ये रजिस्टर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जा रही तो हीट बन गया या लाइट बन गई, because energy got transferred, converted. Right, yeah. Similarly, अब आइंस्टाइन ने बोला जैसे बाकी सब एनर्जी हीट लाइट, वैसी मास भी एनर्जी. So you can convert one energy to another. तो ये जो एनर्जी थी वो मास से आ गई या मास में कन्वर्ट हो गई, ऐसा हम कर सकते हैं, ऐसा आइंस्टाइन ने बताया. But this is not in classical mechanics. This normally happens in cases which are very unusual. But this must be this must be happening at like quantum level, like really small like. हाँ तो वही है ना, ये quantum level ही तो है. No, like this is not applicable for like things we see around us, right? No, it's not, because we don't see things moving at the speed of light. But hence it is theoretical that if things move at a speed of light, तो हम इतने बड़े masses को speed of light में नहीं move करते, but छोटे masses को speed of light में move कर सकते, including the light itself, right? So these are very small masses, which is why these are applicable for small particles, because they can move at very high speeds. तो अब ये जो mass defect है ये उसके लिए ही है, ठीक है? This is a theoretical concept. Sorry? Even this is a theoretical concept, right? So theoretical is what? It's theory is what? It's a perspective. अभी उन लोगों ने अगर measure किया, उनको मास का डिफेक्ट आया, तो उन लोगों ने एक थ्योरी बनाई कि भाई क्यों डिफेक्ट आया, इसलिए आया होगा. हाँ, इसलिए आया होगा बिकॉज एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन वहां पे तो सिर्फ मास अवेलेबल था और तो एनर्जी थी नहीं, तो उसका मतलब फिर मास उस एनर्जी में कन्वर्ट हो गई होगी. दैट्स अ थ्योरी दैट दे गिव, राइट? ओके. E इक्वल्स टू डेल्टा mc स्क्वायर. डेल्टा mc क्या हो गया? z क्या है? एटॉमिक नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर है उतना इनटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस
atomic number minus mass number minus atomic number will give you mass number of neutrons. So number of neutrons into mass of neutron minus जो total mass है इसका किसका न्यूक्लियस का. So this will give us the mass defect into c square, right? Note कर लो, समझो इसको क्या लिखा हुआ है, if you are able to get it. So how long will this chapter take, excluding decay part? Half an hour more. Done? लिख लिया इसको? Cool. The mass defect reappears as equivalent energy delta mc square, which is liberated during the formation of nucleus. Conversely, an amount of mc square of the external energy is required to break the nucleus into protons and neutrons. This energy is called binding energy. Simple सी बात है, अगर ये दोनों पास आए थे तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई थी उतनी एनर्जी वापस डालनी पड़ेगी अगर इनको ब्रेक करना है. ठीक है? ठीक है? Cool. This is called binding energy. The binding energy of the nucleus is defined as the minimum energy required to separate its nucleons and place them at rest an infinite distance apart. Note कर लो. What part do you? ये binding energy. Done? Average binding energy per nucleon of a nucleus. It is the average energy spent to remove a nucleon from the nucleus to infinite distance. Okay.
It is given by total binding energy divided by the mass number of the nucleus. Simple सी बात है, जितनी बाइंडिंग एनर्जी लगी सबको अलग अलग करने में डिवाइडेड बाय जितने पार्टिकल को अलग अलग किया, दैट इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. So total binding energy upon number of nucleons, which is atomic mass number. ये भी नोट कर लो. Done? Sure. A given coin has a mass of blah, and that will be required to separate all the neutrons. Assuming the coin is entirely made of blah. चलो बताओ. Sixty-two point 92960 is mass of what? Yes. What? Guess. Oh, protons and neutrons. No, atom. Huh? Atom is the atomic mass unit, right? इलेक्ट्रॉन का कोई मास नहीं होता. You can assume that. हुआ?
I found the total mass defect. Now, टोटल मास डिफेक्ट आ गया, हाँ, तो फिर सही है, तो एनर्जी भी आ गया, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर. हो गया? नहीं हुआ? I'm getting 1.81 into 10 raised to 38. Kaveri Smera, come on video. How will we solve this question? I don't know. एक मास का, एक एटम का मास दिया हुआ है, Yeah. उसके बाद क्या कर सकते हैं आगे? बताओ. The एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 into 10 नहीं, raised but to होता 20. क्या है? Where is it used? calculate the something. When you have number of atoms in 1 gram. ठीक है, तो यहाँ पे 3 ग्राम है, तो कितने एटम्स होंगे वो पता चल जाएगा. एक एक एटम का कितना मास है वो पता चल गया, तो टोटल मास कितना हुआ वो पता चल जाएगा, राइट? ये देखो, गिवन मास ऑफ द कॉइन इतना, एटॉमिक मास ऑफ Cu इतना. Instead of mass of proton as 1.00, I took just 1. ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन पता चल गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता चल गया, फिर इनका डिफेक्ट पता चल जाएगा. तो देखो, सिंस ईच एटम ऑफ कॉपर कंटेन्स 29 प्रोटॉन्स एंड 34 न्यूट्रॉन्स. हाँ दिया हुआ है क्या? ओके. Therefore, mass defect of each atom using the relation ZMP blah blah blah, right? तो यहाँ से डिफेक्ट पता चल गया तुमको. नंबर ऑफ एटम्स इन 3 ग्राम कॉइन विल बी इतना, क्योंकि 1 ग्राम में Why did they divide it by 63? Because that's the atomic mass. So, तो 3 ग्राम